Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the second session of Global Ethics Day Conversation Series 2022, organized by ACC Pakistan and its supporting partners. My name is Shah Muhammad Khan, and I'm Business Development Manager for ACC Pakistan. I'm also an ACCA member. So before we kick off today's session, we previously had a similar first session which was around regulator governance and ESGs. So this conversation would be very interesting. And before we kick it off, I would like to give a quick tip to our ACCA members who are willing to claim CPD hours for this event. They can join through www.accapdhub.com. So that's a quick tip. So guys, while speaking about the importance of ethics for ACC, I think ethics play a very crucial role in whatever we accountants do. And we as accountants and finance professionals uphold a profession with ethics at the heart of everything. And I think it builds trust and credibility of our work among our customers as well. So while we are having this event, which is actually based on one of our global themes, Accounting for a Better World, which was a long-lasting initiative primarily aimed at government policymakers, regulators, international organizations, thought leaders, and influential employers and educators. It intended to be a catalyst for engagement and conversation on the vital role of the profession in creating a better world, while articulating and promoting how ACC and its members are at the forefront of delivering positive, sustainable change for the good. So I would also like to thank our partners for today's event: CFA Society Pakistan, Pakistan Business Council's Center of Excellence in Responsible Business, Habib Bank Limited, Institute of Cost and Management Accountants Pakistan, Lahore University of Management Sciences, Pakistan Institute of Corporate Governance, Pakistan Stock Exchange, Security and Exchange Commission of Pakistan, and Sustainable Development Policy Institute. So the topic of today's session, which is taking place now, is Enabling Pakistan Digital Transformation and Ethics. And just to share the flow of the session, we will be starting off with a keynote address, followed by a high-octane panel discussion on the same topic. So moving on to our keynote for today, we have got our distinguished guest speaker, Mr. Nadeem Hussain, who is founder of Planet N Group of Companies, Chairman, Pakistan FinTech Network. Hussain is one of Asia's leading social impact entrepreneurs, technology investors, and financial inclusion pioneers in Pakistan. Nadeem is also founder of Telenor Microfinance Bank, lauded by the World Bank as one of the most socially impactful banks in its field. Its EasyPaisa offering is the world's second largest branchless banking payments solutions, moving over 5% of Pakistan's GDP in 2017. In its first entry into Pakistan's market, Alibaba Financial has recently acquired a 45% stake in the company at the valuation of $410 million, representing a 41x multiplier of its initial 2005 founding capital of the business. Nadeem's subsequent venture, Planet N Group, is an emerging market social impact and technology investment firm with portfolio companies in Pakistan, Egypt, and UAE. Key sectors include nano and microfinance, fintech, data science and analytics, machine learning and AI, blockchain, e-health, e-education, e-media, and e-commerce. So handing over to Mr. Nadeem for his keynote speech. Over to you, Mr. Nadeem. Thank you. Thank you, Shah Mahmood, and thank you, ACCA, for giving me this opportunity. I think this is a very exciting topic, ethics in the digital world. So let's just define ethics briefly and then get into the digital world
that we live in. So ethics is the foundation of a moral and just society as defined by the Greek philosophers. If you want a moral and just society, then you must have solid ethics in your country. Unfortunately, we have serious challenges in that, but so do many other countries. So we're not the only people, the only exception. But we are living in a digital world. The digital transformation is taking place as we speak. And people talk about revolutions. A revolution is when millions of millions of people change behavior. And we saw that first by the introduction of a feature phone, and then the introduction of a smartphone and the associated apps. 130 million people with smartphones with more than 100 million different apps, if not more than that, downloaded. So this is the world we live in, where we communicate more now through messages, through Facebook, through Messenger. Our entertainment is TikTok, Instagram, and all the other apps that our young population uses and the older population. And that's how we communicate. And as a consequence, the 60 million smartphones that exist in Pakistan are carrying very sensitive data, our whole life history, what we buy, when we take our money out, what we see, where we travel. All these things are being tracked by the apps you've downloaded, and you've given permission to those apps to monitor these issues on you. And that's where the issue comes in. What is the ethics in the digital world? Because it's a serious, serious issue. More than 50 countries in the world are now grappling with this. Should there be a global standard on what is defined as digital ethics? In Pakistan, this is not defined. There are laws being propagated, and even if current laws exist on data privacy, they are not being implemented as such. Data is, and people say data is the new oil. Data is not a new oil, because oil is a diminishing asset. Data is like sunshine. It just keeps on increasing. Terabytes and terabytes and terabytes of data keep floating. And each individual's profile is now being maintained by various people whose apps you've downloaded on your phone. You'd be amazed at the amount of data points they've collected on you. Now, collection of data is the first step. The real challenge comes in when algorithms start making decisions on your behalf or on the potential provider's behalf for you. And that's where potential data bias comes in. That's where data abuse can take place. That's where transparency and other issues come in. So while data has certainly made our life easier, we can now open a bank account online. We can do telemedicine online, get doctor diagnostic. We can buy online. We can do a digital pharmacy online. We can get tuition online. Most things we can do from the safety and ease of our own home, sitting in our bedroom or drawing room or whatever. But there is a price, and we don't understand that price, and sometimes that price comes to bite us. So if you look at AI-driven solutions and data collection that people are holding for you, and mind you, there are custodians of your data, not owners of your data, and that again is a legal point, and the world is split on that. There are 5 principles we ought to look at when you're looking at ethics in the digital world. One is trust. If I am willingly giving my data to a provider, whether it's Facebook, whether it's Instagram, whether it's TikTok, or whether it's local apps, because local apps also ask you for data, I should have trust in them that my data is not going to get abused. My data is not going to be floated for potential cross-sell, upsell, and which it is, because we don't read the small print. Every time you're giving consent in your hurry to download the apps, the very fine print, in some cases, apps even say, the data we have in you is our data, you have no right to it. So trust when this data and the use of algorithm takes place is very, very important feature, and the first pillar of
digital ethics. Second thing is transparency. Most apps are not transparent about the data they collect. I mean, they might even hear your conversation on the phone, but it's not as clear, transparent that they're tracking your GPS movement, they're listening to you having your conversation, and based on that, the algorithm is figuring out what to sell you next. So when we live in a digital world, there must be laws and regulations which say that if you're going to collect data on an individual, what's the level of transparency? What's the gold standard for transparency which needs to be put in place to ensure that what's happening is so everybody knows. Remember, the less technologically advanced you are, the less you're able to talk about who's holding my data, and you're willingly giving your consent to various people to access your data. Third thing is confidentiality. If I'm giving my data to somebody, I hope it's going to remain confidential. But there's abuse over here, and we can talk about, if I bring the case in, back to Pakistan, we have about 50 buy now, pay later providers in Pakistan. Out of the 50, I would say only about 10 to 15 are regulated. The rest are operating in this gray area where they don't have approval from the SECP, and they're lending. And the basis, one of the criteria for them making an instant decision in lending to you is asking you to have access to your phone to scrape all the data points they need from your phone set. That includes your contacts, that includes parsing any SMS you've got from banks on your financial transactions, may include your photographs. So there were instances in Pakistan where they had downloaded your contact list, and then when that individual who had borrowed money did not pay, the provider started sending messages to all the people in the contact list of the individual saying, this guy is a deadbeat, borrowed from us, didn't take the money. Now that's significant breach of data confidentiality, because when they were seeking the data, they didn't talk about using data on your phone for collection purposes from your contact list. Now that's an ethical issue, which obviously subsequently got reported, but I'm giving you an example of how ethics start to play a big role. Same thing, with the fifth principle being fairness. By fairness, I mean that if you start using algorithms for determining decisions. So Amazon, Scrap is AI program for hiring using AI. So what it used to do, it get thousands of CVs, see which ones got successful, figure out during neural network, the people who got successful to the people who had applied, to build a profile of what kind of applicants they should be screening. So they got 10,000 applications, they only want to interview maybe about 100. And the AI was being used to filter that through. And they stopped it because it was creating a bias for women, because most of the successful people they initially had were men. The algorithm picked up that, and as a result started discriminating against the women applicants. And so Amazon, which is no slouch as far as big data AI is concerned, stopped using AI for figuring out how to hire people. Same thing again when you're using facial recognition and facial features. You've got about 14 key distinguishing parts on your face for profiling criminals. Theoretically, you can say, I go to a jail or prison and I take the faces of all the people that exist in that prison, and I see a commonality of features, and then I use AI to say, if people with these, if I have enough of a data set, I can create an algorithm that says that if you have these features, the probability is you may be a criminal. That led to a huge bias between black and white, because there's a preponderance of black people, in a prison as opposed to white people. And again, you got into the ethics of data bias, where if there was a high number of people in your data set, then the data started biasing against,
the other element in your potential borrowers, or in this case, criminals. So coming back again, because we use AI, because there is a huge amount of data set that we're actually using, ethics has become in some ways much more important, because previously, you had a physically written CV, people were looking at that. At best, they would put an Excel sheet and try to find some commonalities. But the power of AI, big data, is such that algorithms can make various decisions for potential providers, whether they're providers of goods or whether they're seeking employment or whether they're profiling people for a particular job. All this requires some standards, and we are very far from that, from establishing any standard as far as trust, transparency, confidentiality, or fairness is concerned. The other issue is also, the fifth pillar, I would say, is revenue share. If Planet N, for example, has 100 million people, 100 million customers in its 36 companies. Let's say, for the sake of argument, I create a unique identifier, and of the 100 million people, maybe I'm able to generate 20 to 30 data points, given the different kind of companies we have, on people who are within this group. And I then create a profile from these 100 million people. Let's say I have some overlap, and I create at least a profile of 10 million people from this 100 million people with 30 to 40 data points. Now I have a very rich set of profiling just within the Planet N group. And then let's say I do a cross-sell, upsell to a third party, and I say, you're looking for people who are between 20 and 30, who are urban, who are female, who live in a posh neighborhood. I have a data set for you, so you don't have to go a shotgun approach. Here's a target audience for you. If I do that, and that person starts getting SMSs, then I should have a responsibility for firstly, seeking their consent, that can I share your data with this potential provider of service? Secondly, if I make money on that, I should ensure that some of that money goes back to the customer. So that's the part where you're being fair in there. Firstly, seeking consent, and secondly, sharing some of the revenue that you're going to get from the data that you've created from a particular customer. Remember, whoever has the data, let's talk about banks. Banks have huge amount of data on each person. If you're a bank customer, you know how much frequency of inflows, outflows, credit card payments, e-commerce payments, ATM withdrawals. So they have all that data. Banks in Pakistan don't lend to individual customers. The total lending base they have is less than 1 million people. Let's say I'm a third-party lender. I want access to that data, so I can use those data points for making an instant credit. I want to make a credit decision in 10 seconds. So I don't want a salary slip. I don't want a utility bill. I just want to use data that exists if I have access to that bank account. Then we come into open banking. Who owns that data? The bank says the data is mine. The customer says, no, that data is mine. But obviously, there can be abuse of that data. So the central bank needs to put in a regulatory framework for open banking to ensure that the bank is just the custodian of the data, but the data, when it's acquired by a third party, has to be with the consent of the applicant, the person who actually owns the data, and there has to be a framework in which that data is acquired. Many countries have created open banking regulation. Pakistan is starting to work on it. So this topic that we've got today, and I'm, unfortunately, I, can't be part of the panel discussion afterwards, because this is very, very rich, and it's very, very, topic is topical for the day, because we are living in a digital world. Every day, more and more of the process that we have gets digitized. When it gets digitized, the customer journey changes. It becomes supposedly easier. When it becomes easier, then more people start using it. That means more data is created. When more data is created, algorithms start making decisions. That's when the issue of trust, transparency,
revenue share, confidentiality, and fairness come in. And we as a country ought to be looking how do we establish standards, because we have one of the largest youth cohorts in the world. Our tele density is north of 90%. We have 150 million cell phone holders with about 60 million smartphone holders. This is a live and it's a clear and present issue for us that we need to tackle. So on that, I'm going to stop. I think I've hopefully given food to thought for the panel discussion to follow. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nadeem Hussain, for effectively setting the scene for our panel discussion and highlighting all the ethical dilemmas which are being faced in this digital transformation and the new digital era. To give it, take it to the next level and start our panel discussion around these interesting insights shared by Mr. Nadeem, I would like to hand it over to our moderator of today, Mr. Rauf Ali Jan, who has vast experience of working in Pakistan, Oman, Bahamas, and Canada, where he was able to provide innovative yet practical solutions to Colgate-Palmolive, Franklin Templeton, Pfizer, Habib Bank, Tangerine, Manulife, Royal Bank of Canada. Rauf is also a fellow ACCA member and is also an MBA in Strategic Management from Schulich School of Business, York University. So handing over to Rauf Ali Jan, please take over and introduce our today's panelist for the session. Thank you. Thank you very much, Shah Mohammed, and thank you, Nadeem Saab. That was very insightful discussion you have in the beginning of the session. Welcome all the audience participants. My name is Rauf Ali Jan, as Shah has just explained. Before I introduce the panelists, I would like to convey my thanks to the ACCA and the sponsors. I would also like to set some ground rules so that if there is any disruption during the panel discussion, there should be the rules to follow. If my voice is non-hearable, then Shah Mohammed or Ali Shan from ACCA will take over and they will moderate the session from there. If during the session, if there is any issue and we are unable to hear from one of the panelists, then I will move the question to the other panelists. I would request panelists to keep their questions, their answers or responses sharp and crisp and short so that we'll have more discussions going forward. I will start with alphabetical order so that all the panelists are very prestige for us. The first one is Asim Siddiqui. Asim Siddiqui is a country managing partner, EY Ford Rhodes. He's a chartered accountant, member of different accountancy bodies. He is leading the country managing partner of EY Ford Rhodes. He has led the consulting and transaction advisory in EY. He has created or transformed different advisory services within EY. Welcome, Asim sir. Next, we have Badr Khusnood Saab. He's a co-founder of Fishery and Bramers. He has served as the chairman of Pakistan Software House Association, which is PASHA. He is with us, and we are looking forward to hear some very good insights from you. Assalamu alaikum, Badr Saab. Thank you. Walaikum assalam. Next, we have Roshani Zafar. Roshani Zafar is founding and managing director of Kashyap Foundation. Very insightful and is working on women empowerment, and Kashyap Foundation is a fintech startup. She has been awarded the Sitara Imtiaz and Scholar Award and Schwab Foundation Award. Assalamu alaikum, Roshani Zafar. Walaikum salam. Thank you. So we'll start with where Nadeem Saab has left us. He's talked about data, he's talked about transparency, fairness, algorithms, and all these things. So I'll start with Ms. Roshani from you. My first question is where Nadeem Saab was talking about that with data and with so many things which is going on. What are the best practices for management of data risks and governance for sustainable business? So I would like to continue where Nadeem Saab has left.
थोड़ा सा डाटा के ऊपर बात करें, थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से डाटा की गवर्नेंस पे बात होती है। He raised very valid points as you can imagine कि डाटा को किस तरह यूज करना है, और डाटा को हम ओपन भी नहीं कर सकते, हम हर किसी को बता भी नहीं सकते, और हर जगह हम छुपा भी नहीं सकते, because we have to earn some money from that data. So data Right. risk and its governance. Over to you. Thank you. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. And I'm going to take up some of the points that Nadeem has already mentioned, particularly from a gender perspective. So when we talk about data and privacy and we talk of confidentiality, this impacts access of women in particular to the digitization or the digital space. Let's go back to COVID and take a step back. And as Winston Churchill said, never let a crisis go to waste. So in the context of COVID, a lot of the digitalization got leapfrogged. And we all know that even now, as we sit amongst ourselves having this webinar, the future of work has changed for all of us. And that in itself has opened up opportunities. The same goes for for digitalization. It does open up huge opportunities. It opens up opportunities for businesses to grow their segments. It opens up opportunities in terms of bringing down costs. It opens up opportunity in terms of access, and it opens up opportunities in terms of economic options, especially if we look at it from a women's perspective. So if we look at the overall concept of digitization and the digital revolution, it's got a lot of pros attached to it. But then the underlying cons that we really need to be aware of, and that's really what organizations need to look at, is responsibility of data, because we are collecting a lot of data of our clients. How do we protect it? And especially in my context, so just to clarify, Rauf, I do not run a fintech. I run a microfinance program that works with women in communities. And most of the women that we work with are women who are not literate. And then on the other side of the digital divide, there are women who don't own smartphones. They may not even have feature phones. So when we look at them, and the ITU data that recently came out shows us that in Pakistan, the gender digital divide is much bigger than the rest. So to be cognizant of that, I think one of the most important things we need to do based on the segments that we serve is digital literacy. And unfortunately, we didn't have one of our panelists here today. She's done a lot of work on this. I personally believe that that is really one of the key areas that we need to. A lot of times we are signing off things and giving over our data to through applications, and we don't even know how that data is going to be mined. And there are extreme situations that have come out of it. So I think we have to start educating our clients, educating our staff, educating our boards also on how digital information has to be used. One is the responsibility, the other is the accountability. And we've also had Nadeem talk about the transparency element. We make people sign off things, but we are not transparent. We don't tell them what data we'll be mining from there. Who are we going to be selling that information to? So the downside of all of this is, we have cybercrime emerging, we have hacking, we have fake news, which we all know has actually impacted on political outcomes in many countries. So all of this is the dark cloud on the use of digital information. In Pakistan, of course, there are a lot of good things that have happened that Nadeem has already talked about in terms of leapfrogging on financial inclusion. However, we still have a long way to go on that. And I think until we are grounded in ethics, we may be in a situation where we will do disservice to our customers as opposed to adding value to their lives. So I'll stop there for now. Thank you, Roshani. And that was very insightful from the perspective of gender diversity, and also that you are doing something with the people of Pakistan, or helping them at the level where they cannot have smartphones, or also even the feature phones. Moving on to Asim Saab. Asim Saab, अभी अब जो रोशन ने बात करें थी कि हम डेटा में ट्रांसपेरेंसी भी देखें, और डेटा में हमारे पास गवर्नेंस का बहुत सारा इशू है. You deal with transaction advisory, you deal with a lot of digital landscape where शायद बहुत ज्यादा डेटा की यूजेज भी होती है, और डेटा को आप डिफरेंट तरीके से देखते भी हो. एट अ कॉर्पोरेट लेवल, एट अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल, किस तरीके से आप डेटा को ग्लोबल एथिक्स डे के हवाले से देखते हैं? व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ दैट?
Right now, the kind of access to data information that is there is more than. Azim sir, आपकी आवाज थोड़ी सी slow आ रही है. If you can speak a little Can you louder, hear me come now? closer. Yeah, better, yes. So the access to information and data is much more pronounced now than it has ever been in the past, at least the digital data. And with everything, as Roshana also said, there is pros and cons. The advantage of this is that the data being in digital format can be protected as well. And you can create frameworks within organizations on data protection. So in Europe, you've got GDPR, which has set ground rules on what is the kind of data that can be held for people and rules around data protection. Unfortunately, we don't have that at this point in time. But in the corporate world, in organizations, especially in regulated entities, there can be frameworks that can be put in place to ensure that data relating to the work that's being done, data that's held with respect to employees and customers and vendors, etc., is appropriately protected. And frameworks could include masking of data, making sure that the data is restricted within the circle of people that have access to it, and the data is cleaned off. But there is a lot more process and diligence that is consistently going to be needed. And organizations will have to take data security and data integrity as a very critical and important component. Asim sir, my apologies to interrupt, but आपकी आवाज जो है ना वो अभी बीच में दोबारा से कम आना शुरू हो जाती है. So I think you should speak a little closer. Yes, I think that would be better. जी. So the importance of data protection and data governance is really enhanced in this present day and age and in the circumstances. In terms of opportunity, there is a lot more that can be done with data. So where we had physical controls and manual process for looking at things and governing information, you have all of that now digitized, and programs can actually screen and stop all of that process. There is a heightened need for greater cybersecurity as more and more digitalization takes place. More and more companies and operations and businesses, even small businesses, are having access to your information and data. And I don't think there is really enough awareness at this point in time as to what kind of access people can have to your information. There are apps that are coming out that help protect and screen out the various applications on your handset that are constantly trying to attack and get information from your other applications that are sitting in, and information that's sitting in your on your handset or on your computer when you link that up. So while there is a greater threat that's outside, I think at an organizational level, there is a lot that is happening in organized sectors, in good corporate entities, in regulated entities. But I think a lot more needs to be done to create frameworks where data security is highlighted, is important. There is frameworks for it. It's constantly monitored. Ethical matters are constantly communicated to people, because a lot of times people don't think something that is wrong is actually wrong, and they need to be told that. So just basic communication on the importance of integrity of other people's information. Asim sir, I got the gist of things which you were talking about. I think the important thing is जो आपने कही, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करें बदर खुशनूद के साथ भी, वो ये है कि what are we doing from GDPR perspective? अभी नदीम साहब ने भी बात की, रोशाना ने भी कहा, आसिम साहब ने भी GDPR स्पेसिफिकली बात की. शायद जो ट्रांसपेरेंसी की बात है या अकाउंटेबिलिटी की बात है कि वी आर टेकिंग योर डाटा विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एथिक्स डे, हम किस तरीके से उसको GDPR के रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं, ये कह रहे हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दीजिएगा इसका, एंड देन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस शेयर सम इनसाइट्स. शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू एंड ग्रेट कन्वर्सेशन. आई होप मेरी आवाज आपको सही आ रही है. लाउड एंड क्लियर. थैंक यू. ओके.
बिल्कुल आपने जैसे बात की GDPR की और वो, सो लेट मी शेयर कि पाकिस्तान ने इससे रिलेटेड अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसको 4 साल हो गए हैं, विच इज कॉल्ड पाकिस्तान डेटा प्रोटेक्शन बिल। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने ड्राफ्ट किया था। 2 थे उनमें, एक पाकिस्तान डेटा प्रोटेक्शन बिल और दूसरा क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी। So the cloud first policy is primarily for public sector organizations के rather than के fragmented data lakes या data centers बनते जाएं हर organization में, जहाँ के technical capability इतनी नहीं है कि उसको कैसे secure किया जाए, जो कि आप देखते हैं कि अमूमन at prominent occasions हमारा data पब्लिक सेक्टर का हैक होता है, चाहे वो कश्मीर डे वाली बात हो या कोई ऐसी जगह टाइम आए तो जनरली ये बैटल्स ऑन हो जाती हैं, विच इज द नेक्स्ट फ्रंटियर। बट सो PDPB जो है पाकिस्तान डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये 2018 से बात चल रही है, 2018 से 2020 में इसको रीड्राफ्ट किया गया। कैबिनेट ने अप्रूव भी किया इसको अर्लियर दिस ईयर, आई थिंक फेब में या जस्ट बिफोर द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट it was approved by the cabinet. But as far as the last week or so, if I'm not wrong, the news are कि ये redraft होगा. The new government is thinking of redrafting it. The challenge with all our cybercrime and data-related regulations is that they are all criminally oriented regulations. इनमें कोई civilian part नहीं है. So they are extremely stringent. They are extremely cumbersome to implement. And extremely cumbersome and extremely challenging, और ये समझना भी जरूरी है कि ये laws best practices के मुताबिक नहीं है. They are not efficient. They do not facilitate businesses or SMEs specifically. They are actually, I would say, more towards harassment versus more towards facilitation. और उसकी एग्जाम्पल ये है कि आप साइबर क्राइम बिल भी ले लें, जो हमारा पीका है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसमें भी यही मसला है कि अगर किसी ने कोई बात करनी है, कुछ है, तो आपको उसको पहले पुलिस को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो पहले उसकी रिमांड होगा, तो उसको FIR कटेगी, पहले FIR काटते हैं, रिमांड करते हैं और फिर वो बात शुरू करते हैं, जबकि देयर शुड बी अ सिविलियन पार्ट टू इट. सो देयर इज अ ह्यूज चैलेंज नॉट ओनली इन द लेजिस्लेटिव पार्ट एंड द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी पार्ट, बट देयर इज अनदर चैलेंज. फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वी हैव एनवायरनमेंट कोर्ट्स, वी हैव बैंकिंग कोर्ट्स, बट वी डू नॉट हैव साइबर क्राइम और डिजिटल कोर्ट्स. The challenge is and with all due respect, जो हमारी judiciary है, वो digital immigrants हैं, majority of them. They are not digital natives. They don't understand how digital operates. अब जब वो एक digital ecosystem के किसी case को या उसको hear करते हैं, तो उनकी वो capability या वो उस level की नहीं है जो एक digital native की हो सकती है. तो इसलिए dedicated courts भी चाहिए, जैसे dedicated banking courts हैं, इसलिए आपको digital में वो भी जरूरी है. इसी तरह law enforcement, 99% हमारे लोगों को भी नहीं पता कि मैंने कहाँ जाके अपना साइबर क्राइम का प्रॉब्लम रिपोर्ट करना है, और जिनको रिपोर्ट करना है उनकी कैपेबिलिटी और उनकी कैपेसिटी का इशू है इस वक्त सबसे बड़ा. और पाकिस्तान ने एक और चीज वेरी इंटरेस्टिंग आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान ने जो रिक्वायर्ड या बेस्ट प्रैक्टिस ग्लोबल बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं साइबर क्राइम की, वो भी साइन नहीं किए हैं. तो जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो बहुत सारा डेटा हमारा इंटरनेशनल वेबसाइट्स या प्रोडक्ट्स के पास है, मगर उनको हम रेगुलेट ही नहीं कर सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव द जुरिसडिक्शन, बिकॉज वी डू नॉट हैव द राइट साइंड अप ट्रीटीज विद ऑल दोस जुरिसडिक्शंस. तो इसलिए बहुत सारा इशू, प्रोसीजर्स, लॉ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जुरिसडिक्शन और उसका है. उसके बाद एक और बहुत बड़ा इशू है. आज हम सब बात तो कर रहे हैं इसकी कि हमें ये चाहिए जो डेटा प्रोटेक्शन, और इस तरफ हम सारी बात कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम है कि आपको सप्लाई साइड पे आपको रिसोर्सेज भी नहीं है. सो कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और कौन सी HEC की अप्रूव्ड डिग्री है जिसमें ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है फ्रॉम अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव इज पार्ट ऑफ द करिकुलम. दे आर नॉट अप टू स्पीड देयर ईदर. सो सप्लाई साइड पे भी आपके पास लोग नहीं है, तो लोग शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, देन दे ट्राई टू actually catch up. So we do not have people although we have abundance of youth, of course, जैसे नदीम साहब ने बात की, but हमारे पास trained resources या skilled talent नहीं है इस काम के लिए भी. So supply side का भी issue है, regulatory भी issue है, और फिर of course जो corporate governance में अगर specifically मैं SMEs के एंगल से बात करूं, तो वहां leadership को भी नहीं पता मुझे क्या करवाना चाहिए या क्या करना चाहिए. वो सिर्फ उस वक्त अपनी बिजनेस एफिशिएंसी देख रहे होते हैं. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है. वो रोज क्राइसिस मैनेजमेंट में पड़े हुए हैं, रादर देन कि वो ये चीजें देखें कि हमने
कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ESG को देखना है. So there's a huge challenge. For example, digital transformation की इस वक्त जो taxation की cost इतनी ज्यादा है कि आप देखें हमारी banked economy is not more than probably 70%. मतलब I think 80 या 70% के around होंगे. I think रोशानी या नदीम साहब उस पर ज़्यादा बात करते हैं. So those, I mean, हम अभी तक with all the fintechs, with all the new regulations, हम वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं. So I think there's something which the state has to look into and facilitate this ताकि वो किक स्टार्ट करेंगे. और उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट हर काम खुद करना शुरू कर दे. दैट्स अनदर चैलेंज. द मोमेंट यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, दे स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग देमसेल्व्स एंड दैट्स नॉट देयर जॉब. सो आई थिंक देयर आर ह्यूज चैलेंजेस. हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हैं, बट इन दोनों को कहीं मिलकर इकट्ठे बैठना है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से गवर्नेंस को देखना है और समझना है. और इट्स एन इवॉल्विंग एंड सब्जेक्ट. तो आई थिंक उसमें अप टू स्पीड रहना भी बहुत जरूरी है. So just a few thoughts there. जी रोशनी, जब बदर बात कर रहे थे GDPR की और उन्होंने कुछ पाकिस्तानी लॉस की बात की, तो मुझे लगा शायद you want to add something. Is there anything you wanted to add to that conversation? I'll give the mic to you. Yeah, thank you, Rauf. Very interesting what Badr was saying on the laws that need to be put into place. And Pakistan का unfortunately malaise ये है कि हम laws तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं, मगर जब उसकी implementation की बात आती है तो वो कभी भी नहीं होती. तो अगर हम साइबर क्राइम की बात करें, which Badr has touched upon, it actually affects women a lot in this country today. And I'll share with you some very broad statistics. It's not about digital revolution, but it's about social media, just to give us an idea of the extent of the problem. So if we look at Pakistan today, there's 71 million social media users, of whom 41 million are Facebook users. 19% of them are women. So again, we are seeing that women are less represented, but they are there. If you look at TikTok users, there are 18 million, of whom about 25% are women. So जब हम इसको देखते हैं, इस bandwidth को, तो हमें ये, और YouTube को देखें तो 71 million जो है वो YouTube users हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 29% खवातीन है. तो इसमें potential बहुत है. I mean, if you look at it, there's a huge potential. And it's already happened. Digitization, social media, access to information, all of this is already out there. We just need to set the rails into motion. But in that, the most important thing is how the value system that we construct in this. And that unfortunately is lacking. I'll give you an example from my own organization. When we hire people, we actually train them on how to use Facebook, how to use WhatsApp, what information to share with whom and how, and we actually educate them on data use in the organization. What data is confidential, what is not. And the point that Badr was making, they are not coming from institutions. Institutions are really not talking about the rules of business or the rules of engagement or ethics in use of digital information. However, people are already on this, they're already using it. So वो जब आते हैं हमारे पास, तो हम उनको educate करते हैं, just so that they know what the ethics of using all of this, all of these spaces is. The good thing is this: there is engagement. The good thing is this gives you an opportunity to get diversity of opinion. But the bad news is that this can also lead to exploitation. So if we look at cybercrime against women, for example, and I've looked at those logs very closely, there is not even 1% in cases of cybercrime that you have people resolving those cases. 1% of the people are actually taken up for that. 99% of the cases don't go anywhere. So this again creates problem. Then we have women in STEM. अगर आप STEM की बात करें, science education की बात करें, तो अभी fintechs में या स्टार्टअप्स में, फिनटेक रिलेटेड स्टार्टअप्स में पाकिस्तान में या IT स्पेस में 10% ऑफ द एम्प्लॉयज आर वुमेन. सो अगेन, औरतों की तो इस स्पेस में यूजर्स हैं, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, and they are not the ones making the apps either. So the notion of another element that I think is very important is the human-centered software development that is equally important. And that's because a lot of women are using these apps, but they don't really know the value and what information they're giving over. So agar hum is pure situation ko dekhen, so we are already in the midst of it. It's already happened.
Now we have to catch up, and that's where the intention is lacking. And that's why I think the private sector has to come in. I continue to espouse कि ये हमें खुद से अपने इदारों में पहले करना पड़ेगा. We will have to be the trendsetters. अगर हम गवर्नमेंट का इंतजार करते रहे, रेगुलेशन का इंतजार करते रहे, तो ये नहीं होगा. That's my take on this. Thank you, So Roshani, sorry, Rauf, if I may just add. Sorry, I know it's back and forth, but quickly. So Roshan आपने बिल्कुल सही बात की. The problem is कि policies और regulation इसलिए critically important हो जाते हैं. For example, just take an example of Web 3.0. हम इस वक्त Web 3.0 की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया उस तरफ evolve कर रही है, decentralized internet की बात हो रही है, but हम crypto बंद करके बैठे हुए हैं. इसी तरह हमने कुछ देर पहले 3 साल के लिए YouTube भी बंद किया था. अब the problem is कि regulations truly affect digital ecosystem. Or and that's where it becomes critically important कि private sector ना सिर्फ अपना काम जरूर करे और उसको proactively करना ही पड़ेगा, मगर someone from the civil society or even the private sector has to take lead on the regulations, because public sector really lags behind on that, and they are mostly generalists. तो अगर private sector से specialist नहीं जाएंगे और उनकी help नहीं करेंगे और उनको guide नहीं करेंगे, but I agree, of course, वहाँ और मसाइल हैं inefficiency के, जो incompetence के, जिसकी वजह से solve नहीं होते problems बहुत सारे. But I think digital is probably the only level playing field जहाँ women inclusion can be the fastest, अगर सिर्फ सही तरह से policies बनाई जाएं. अभी भी freelancing में और otherwise भी, I think there's a huge inclusion opportunity, because even women who are at home can still work online just with a basic internet connection. So just wanted to highlight those facts and thank you for that perspective. Sorry, Arav, back to you. No, thank you, brother. Very, very insightful discussion. Or thank you, Roshane, as well. कि आपने जो बात की वो that is the right way to start working on कि हम private sector को involve भी करें और उसको वहाँ से evolve करें कि किस तरीके से policies बनेगी. I would like to change the pace a little bit. हमारे पास क्योंकि ACCA है, finance के बहुत सारे लोग involved हैं. I would like to bring it. Asim, can you hear us? I can hear you, but I just hope that my voice is clear. Yeah, it's better. Just speak closer to your mic or laptop, and we'll be able to hear. मेरा सवाल जो था आसिम, वो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि हमारे पास बहुत सारी, जैसे आप ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में काम करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि शायद या तो कैलकुलेशंस में कुछ प्रॉब्लम होती है, या उसमें एथिकली कुछ नंबर्स शायद सही प्रेजेंट नहीं किए जाते, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी हमने रिसेंटली देखे हैं, एयरलिफ्ट है, वावा कार्स है, कार फर्स्ट है, व्हिच हैव लेफ्ट पाकिस्तान एब्रप्टली. इज देयर एनी एथिकल डिलेमा देयर जो कि हमें एड्रेस करना चाहिए, या फिर कोई और चीज है व्हिच इज बिहाइंड दैट? आई वुड लाइक टू पिक योर ब्रेन ऑन दैट. जी. I think it's just that startups and techs are new industry where people are looking at new ideas that still have to be tested in the market, and they take a bet on it. Sometimes these bets work, at other times you need to give them gestation period. And sometimes things go wrong, as they would in any other business. So I think when it comes to Bava cars, for instance, if the ecosystem is very different here compared to what it was in other parts of the world, where you've got people not wanting to disclose the value through formal channels of the transactions, that limits the market size. COVID created a very different environment for Airlift, and changed their business focus and dynamics. The model seemed to have been working, but something went wrong, and the whole market dynamics changed. So I think it could happen really to any new business. A lot of new businesses start and fail. People that are investing in these areas realize the risks associated with that. Some bets, go up and are a sixer, and then there are certain things that fail. I really think that, it's not really ethical dilemma specific to that industry. Any new business that wants to raise money, whether it is from banks or whether it is from investors, will want to show a very attractive picture for the future. A hockey curve is what we always get told, that this is what the projections look like, and it is for the investors in the business to assess whether that is rational, realistic, or not.
where it is a new kind of business, in particularly the tech world, sometimes it's very difficult to see how the future is actually going to take shape because these are new areas. So I really think that, it is no different from businesses that would otherwise want to raise money, whether it's to banks or others. And anybody investing would have to take their positions based on a realistic assessment. Anybody who's trying to raise money would probably want to, stretch the limits of, the attractiveness of the proposition. Sounds good. Asim, thank you. Considering, Roshani, you have another commitment and you would like to leave, I would ask you a question so that we'll get more time with you. My question is talking about there is so many things happening. As you mentioned, after COVID, we all the companies are moving towards digital transformation, and we invest good chunk of money in going digital. Sometimes the impact may be positive, very positive, or maybe it may take a little bit of time and we'll get there. From ethics and culture point of view, how does this journey begins, and how ethically and culturally we have to deal with that? So I think the first thing is that it has to be embedded with the business need. It can't be that you decide one day, you wake up and you say, okay, I need to transform myself because others are doing it too, or this is the norm. So I think the first thing is it has to be strategically thought out. If you are doing this, it has to come from the top. So before you go and you develop your digital plan or digital transformational plan, you have to make sure that you have all your stakeholders as part of that. So if I was to share with you Kash's journey, we have digitized everything. We use a credit scorecard using our client data to decide on lending decisions. We have an app on which we capture all the data. We are integrated with all the possible systems wherever it is, whether it is related to the Credit Information Bureau, whether it is related to collection systems under branches banking, you name it. So technically, we have consolidated all the information and the data points under under the digital umbrella. Now, we didn't do it all at once because, as I shared with you, the market and segment that we serve, it was very important for us to do this carefully since we were dealing with women. And Nadeem talked about something that's very, very important, and that's the factor of trust. When you go to women and you say, okay, give me cash, it's very different than when saying, oh, send me money through your mobile account. Or I'm going to send you the loan transaction is going to be done in your mobile account and you'll get the digital money. Now, the value and the trust factor when it comes to digital money is also a very difficult thing. So from an institution perspective, it's very important to see where are the wins, where are the easier wins when you start on your transformation journey. So for us, the first thing we did was to look at recovery and say, okay, let's do the recovery, let's digitize that. We did that, and then we moved to the credit appraisal. So slowly and gradually, we were able to educate the client, educate our staff who was used to manual systems, essentially, to move the entire staff and train them to get onto this. So behind all of this was, of course, the understanding of what would this do at the end of the day? Would this add value to the client? Would this add value to the organization? Would this would this create efficiencies? Would this bring in more revenue in terms of more clients? Because even though Kashf is a not-for-profit, we are a social enterprise. So we need to make sure that we are sustainable at the end of the day. So this journey is not, and there will be challenges along the way. You know, there are times that you develop an app and it simply doesn't deliver, or it takes longer. It takes longer time for speed to market. So those are also the challenges. And while you are developing the app, you may become obsolete in the whole process because something has changed in the environment. But the way we did it, we piggybacked on digital developments that were happening in the space. So others did the investment, we just leapfrogged on, we piggybacked on them. So for us, it was more building on others. So if there are fintechs developing a certain application or integrating a certain there were aggregators that were coming up in the sector. We just integrated with them. So that helped us and created more efficiencies for us. So these are some of the lessons that we learned along the way. And again, as the market is changing so fast, you have to keep up to speed. That's really the key point. And the bottom line of this is please protect your client's data.
So for us, that's always been a very important part. Even though we developed the credit scorecard, we made sure that we protected the client's data when we used a data science analytic company to do it for us. So that's really some of our experiences. Thank you, Roshani. And considering you have to leave, I would like to thank you for being part of the panel, and thank you very much for very insightful and related discussion. Thank you, really appreciate it. Thank you so much. Thank you, everyone. I'll see you guys later. Ralph, unfortunately, I also have a commitment at 7, so I have to drop off. Thank you. Awesome. I have one specific question. If you have a couple of more minutes before you leave, and I'll ask you those questions. Of course. Yeah. So, Asim, before you leave, I knew that you have to leave. You mentioned it before time, but I would like to ask you about what are the best practices just for the in the transaction advisory services and with the risk advisory services, which you suggest as a best practice to the clients in the data risk and governance for sustainable business? I think having appropriate policies and procedures and having certain code of conduct is very important. So first of all, having a higher level of framework which talks about integrity and ethics becomes an overlying important factor to have, so that your organization knows the importance of sanctity of information and data that is residing with the different people. That's number one. Secondly, having appropriate controls and systems in place with respect to the data, so that only authorized people have access to data that they need. Number three, making sure that data that is no longer required is stored away, scrubbed, or destroyed, so that it is not at risk of going into the hands of other people. I mean, we have policies in place where data that's not required is closed and discarded at the end of the session of whatever work that we're doing, and the client is informed accordingly. So, try not to be in possession of things that you no longer need, so that you're not increasing the risk of loss of that information. Ensure that there's appropriate security processes that are built into, the work that you do. Making sure that you have effective systems in place for cybersecurity, so access to information, etc. Appropriate firewalls, making sure that anything that is in public domain is protected through appropriate measures, and just making sure that these implementation of these measures are tested on a regular basis to ensure compliance. This is obviously necessary because there will always be people that may not take guidance seriously, and it is through a process of constant check and balance and declarations that you ensure that these are followed. Thank you, Asim. That was some very practical examples of making sure that governance around data is being managed. We really appreciate your insights and related discussions. Thank you very much, and thank you for being part of the panel. Thank you very much. Meeting all participants, especially Nadeem Saab, other, and CCA for the opportunity. Thanks, Ro. Thank you, Asim. Thank you very much. So, Badr, it's more like you and me are having a fireside chat now instead of having a full panel discussion. So it will give us some more time, and I'll be able to learn some new things from you. I noticed you mentioned a little bit about Web3 impact on Pakistan's digital landscape. Before I jump onto governance part of it or ethics part of it, why don't you tell us a little bit about Web3 impact on Pakistan's digital landscape and what Web 3.0 is? Ji, Bilkul. Thank you, Rauf. I just want to add a couple of
thoughts on a couple of previous questions जो आपके बाकी पैनलिस्ट के साथ थे. So एक जो था एयरलिफ्ट वाला और वो कि कैसे कार फर्स्ट और जो स्टार्टअप्स थे वहाँ कोई कंप्लायंस का इशू था या कैसा था कि वो जिस वजह से या डेटा ब्रीच का कोई. So I think हमें वहाँ थोड़ा सा something which is critically important to understand there is that startups specifically from a venture capital perspective is a different ball game. So हमें ये समझने की जरूरत है कि हर तरह का स्टार्टअप्स जो हैं वो they are not the same. Not every startup is the same. हर किसी का इकोसिस्टम भी फर्क है, उसका स्टाइल ऑफ ग्रोथ भी फर्क है, और जो VC फंडेड स्टार्टअप्स हैं वर्सेस अ फैमिली और फैमिली इन्वेस्टमेंट आर्म और institutional investor are different beasts. तो generally speaking जो fast investment वाले हैं उनका fast return का perspective है कि quick investment excessive करो और एकदम growth लाओ hockey stick, एक stage पे जाओ और अगर वो model validate हो जाए तो take it further or just kill that. तो basically in उस केस में I'm sure कुछ और भी challenges होंगे, बट प्राइमरीली जो हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाले मॉडल्स अगर वैलिडेट ना हो तो इट्स अ वेरी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के VCs देन पुल आउट. और जब VCs पुल आउट करते हैं तो आपको ऑफ कोर्स जनरली स्पीकिंग उनको राइट साइज या रैशनलाइज करना पड़ता है अपने बिजनेस को. इस केस में खैर वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, इनके पास ना बफर ही नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं थी कि शायद वो राइट साइज करते, और मे बी इट वाज नॉट एज फीजिबल अगर वो करते राइट साइज, तो दे एक्चुअली क्लोज्ड इट. तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो कि डिस्काउंटिंग फैक्टर पे या वेंचर फंडेड माइंडसेट पे चल रहे थे और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पर नहीं थे, वो इट्स वन ऑफ द बिजनेस मॉडल्स व्हिच अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फॉलो. सो जस्ट अ थॉट ऑन दैट कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बिजनेस को लेके जा रहे हैं तो कई दफा हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाला जो मॉडल है वो कई दफा फीजिबल नहीं होता, बिकॉज अगर आपने सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना है तो दैट्स इम्पोर्टेंट. दूसरा, अभी जो हम लास्ट बात आप आसिफ साहब से कर रहे थे उस पर भी बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वीकेस्ट लिंक है आपके सारे डेटा के अराउंड इज द ह्यूमन फैक्टर. तो अगर आप जितने मर्जी प्रोटोकॉल्स लगा लें, फायरवॉल्स लगा लें, पासवर्ड्स लगा लें, सिक्योरिटी के जितनी मर्जी सर्टिफिकेशंस कर लें, इफ दैट वन पर्सन और अ टीम विच इज सपोज टू लीड इट और इज पार्ट ऑफ इट, अगर वो वीक है, अगर उनके एथिक्स ठीक नहीं है, तो वो दे विल लूज इट. they will, कोई आपका टेक्नोलॉजी will fail अगर humans fail. So it's another important thing to keep in mind. So just wanted to highlight these two things कि human factor और human capacity building और human training जो है वो बड़ी important है इस मामले में कि before anything else. Technology is just a facilitator, but humans can abuse it if they need to or if they want to. अच्छा, जो आपने बात की Web 3.0, तो थोड़ा सा एक क्विक क्लैरिफिकेशन बिकॉज़ मोस्ट ऑफ राउफ, आई डोंट नो मैं सिर्फ जी, कैन यू हियर मी जी? आपका थोड़ा सा मुझे लैग आ रहा है, बट आई डोंट नो शाह, ये मेरी साइड का है या आपको दोनों की साइड से लग रहा है? See, brother, I think it's Rauf Ali Jan, and he's back now. You people can. Okay, जी राउफ, थोड़ा सा मुझे आपके लैग आता है, सॉरी, प्लीज गो अहेड. जी, माय अपॉलॉजीज, मेरा ख्याल है कुछ नेटवर्क का इशू होगा. हाँ, आप चाहे वीडियो ऑफ कर लें ताकि ऑडियो क्लियर है. जी बिल्कुल ठीक है. मैं ये पूछ रहा था बदर आपसे कि जो भी आपने बात की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ के शायद जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं ये या जो नए स्टार्टअप्स हैं इनके साथ थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या फिर मेरा जो पॉइंट था ना इसमें एक एथिकल पॉइंट जो होता है, आई वांटेड टू ब्रिंग दैट टू द लाइफ के ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर्स को जब क्रंच किया जा रहा हो तो बहुत ज़्यादा शायद जो अजम्पशंस हम लेते हैं ना, बीइंग अकाउंटेंट आई कैन टेल यू दैट दीज आर वेरी क्रिटिकल. आप अगर एक अजम्पशन को, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो अगर आप 1.01 की जगह 1.1 लिख दें तो द होल फाइनेंशियल मॉडल चेंजेस. और क्योंकि you understand that customer acquisition costs in these startups are so high,
that it may have some significant impact कि क्या actual cost आ रही है और क्या actual आपने plan किया होता. तो you have shared some very good points कि हर किसी की अलग strategy होती है और हर किसी को अलग different तरीके से लेके चलना होता है. मुझे मतलब before we jump on to Web 3.0 मुझे एक सवाल ये बताएं. अभी हमने बात भी की इस हवाले से human technology is just a supporter of what humans can do, or they assist us in what we are trying to do. They can with social engineering in place, with so many things happening. अभी रोशा ने भी बात करी थी इस हवाले से. हमें बहुत सारी जगहों पे illiteracy की वजह से कह लें, lack of social things, हमें नहीं, we are at a very infant stage in this cycle. बैंकिंग में या इस जगहों पे हम बहुत सारी जगहों पे समझते नहीं है कि शायद डाटा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है. एंड वी शेयर द पिन कोड्स, वी शेयर द अकाउंट नंबर्स, सच इंफॉर्मेशन व्हिच शुड नॉट बी शेयर्ड एंड व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स. जैसे आपने देखा होगा जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, ये जो बहुत सारी हमारे पास एप्स हैं फॉर पेमेंट्स एंड फॉर ट्रांसफरिंग द फंड्स. उसमें अगर आपने एक कोड शेयर कर लिया एंड यू लूज ऑल द मनी इन योर बैंक अकाउंट. सो आपकी बात ठीक है, हमें एजुकेट करना चाहिए, बट डोंट यू थिंक देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म built into these apps, or there has to be some mechanism through which we can make sure that these things does not happen? What are your thoughts on that before you jump on to the next one? जी बिल्कुल, थैंक यू रऊफ. और जो आपने वो बात की, मतलब आप शायद नहीं बोल रहे, मैं कैंडिडेटली बात करता हूँ नंबर फजिंग की. तो और इवन assumptions की कि assumptions कितनी रियलिस्टिक हैं या ऑन ग्राउंड रियलिटी से क्लोज हैं. सो देखें, अगर एक स्टार्टअप में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके इन्वेस्टर की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो ड्यू डिलिजेंस पूरी करे. अगर आप सिर्फ फोमो में चलते रहेंगे, फेयर ऑफ मिसिंग आउट में चलते रहेंगे कि नहीं, मैंने अगर एक दिन भी लेट कर दिया तो मैं लेट हो जाऊंगा और मार्केट कैप्चर हो जाएगी और ब्ला ब्ला, तो फिर तो ये रिस्क दोनों साइड का है. I don't only blame founders for this. I think it is on both sides. अब हमें, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता बट कि किस तरह था, बट ये स्पेसिफिकली जब आप लार्जर सम ऑफ मनी में इन अ मार्केट जो भी इतनी इवॉल्व नहीं है उसमें बात कर रहे हैं, तो आई थिंक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा केयर और की बात होनी चाहिए, एक्स्ट्रा मेजर्स की बात होनी चाहिए कि अगर किसी ने एक assumption ली है तो उसको मार्केट से क्रॉस चेक करना फाउंडर की भी जिम्मेदारी है, और ऑफ कोर्स या उसकी जो भी लॉजिक है या जो भी उन्होंने बनाई है वो इन्वेस्टर की भी उतनी ही है, या उन इन्वेस्टर और फाउंडर के पीछे जो उनकी अकाउंटिंग फर्म या ऑडिटिंग फर्म है उनका भी उतना ही काम कि उसको क्रॉस चेक करने का. तो इट्स समथिंग व्हिच आई थिंक इट एट टाइम्स इट्स इंटेंशनल, या वो भी हो सकता है कि मिस भी हो गया हो, किसी ने ना देखा हो. खैर एनीवे, तो जो दूसरी बात आपने की, सॉरी दूसरा मैं मिस कर गया, आपने जो बात की थी अभी, सॉरी इफ यू कैन रिपीट. मैं सोशल इंजीनियरिंग के हवाले से बात की थी. हाँ सॉरी, जहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक है ऐप से जी. सो देखें, द चैलेंज इज कि ये लॉक एंड की वाला मसला है कि आप जब एक नया ताला बनाते हैं तो उसकी चाबी, अब आप देखें, अभी रिसेंटली FIA एक्चुअली कॉट अ पर्सन who had the capability, जो कि नई रिमोट वाली गाड़ियां हैं जो कि एक्चुअली नॉर्मल की से ऑपरेट ही नहीं होती, वो उनको डिसेबल करके उनकी वर्चुअल की बनाकर नई की, he used to steal cars, जो कटिंग एज नई गाड़ियां बड़ी वाली. तो आई थिंक लॉक एंड की में तो ये चैलेंज रहेगा कि जो भी नया लॉक बनेगा उसकी चाबी भी मार्केट में अवेलेबल होगी इवेंचुअली, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और तो ये इनोवेशन आती रहेगी और नई चीजें. अब जब इनोवेशन की पेस ह्यूमन लर्निंग की कैपेबिलिटी से तेज हो जाती है, तो जो डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है टेक्नोलॉजी से, वहां वो चाहते तो नए फीचर्स इस्तेमाल करना है, बट वो ट्रेंड नहीं है उनके पास. उन्होंने कभी ऑनलाइन, और पाकिस्तान में एक और मसला है, हम हेल्प नहीं पढ़ते ऑनलाइन, हम पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि फटाफट फीचर नया यूज कर लें. तो वो जो कैपेबिलिटी है या लर्निंग है वो हमें ही खुद ही डेवलप करनी. इट्स अ सेल्फ लर्निंग एप्टीट्यूड जो हमें डेवलप करने की जरूरत है, बिकॉज but at times these tactics are so enticing and so subtle कि एक trusted या एक even and this has happened with me last week, like literally एक ऐसी email थी, phishing attack था directed to me. It was so like subtle कि for the first moment I also thought कि बिल्कुल genuine email है, like literally.
यानी अगर मेरे जैसा शख्स जो सारा दिन यही काम करता है, अगर उसके लिए भी किसी को कुछ चैलेंजिंग होता है, तो एक्चुअली लोगों के पास बहुत स्किल है टू अब्यूज अ सिस्टम. सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल. तो आई थिंक सिस्टम्स का मसला है कि अगर आप बहुत ज्यादा सिस्टम्स इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर लोग कहते हैं बहुत कम्बरसम फ्रिक्शन क्रिएट हो गई है, प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अगर वो ना क्रिएट करें, सिंपल रखें, तो अपॉर्चुनिटी टू अब्यूज बहुत बढ़ जाती है, इंटेंशनल और अदरवाइज. तो इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस जो कि यूजर एक्सपीरियंस स्टडीज के थ्रू और सिक्योरिटी स्टडीज के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब आई थिंक विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज जिसमें वो फॉर एग्जांपल आपको OTA आ रहा है, ओवर द एयर आप पासवर्ड्स आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें हो रही हैं, बट मसला है कि बहुत सारे लोगों को टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता. और तो मेरे ख्याल में इसका एक सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हमें हर अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने एकेडेमिया के अंदर इनके कटिंग एज सब्जेक्ट्स को एम्बेड करने की जरूरत है. प्रिवेसी, सिक्योरिटी, हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन, ये चीजें हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में ऐड करने की जरूरत है. द प्रॉब्लम इज कि वहां पढ़ाने वालों को भी नहीं पता कि क्या पढ़ाना है इसमें, और करिकुलम बनाने वालों को नहीं पता क्या करिकुलम बनाना है. वहां भी डिजिटल इमिग्रेंट्स का मसला है. तो आई थिंक दिस इज अ लीडरशिप चैलेंज कि उनको ये चाहिए कि वो इस चीज को मिनिमाइज, बिकॉज उसकी वजह से डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ट्रस्ट नहीं आता. जब उसमें ट्रस्ट नहीं आता तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती. लोग ये समझते हैं कि ये सारा काम खराब है, गलत है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते. सो दीज आर चैलेंजेस जो कि ऑर्गेनिक हैं, एंड आई थिंक द स्टेट कैन फैसिलिटेट सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स. Before मेरा ख्याल है आपको मेरी आवाज सही आ रही है. लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द वीडियो जस्ट इन केस. अभी नदीम हुसैन साहब बात कर रहे थे ओपन डेटा की. बिफोर वी जंप ऑन टू द क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू, बेसिकली आई एम सो फार अवे फ्रॉम दैट क्वेश्चन. मैंने उसके बाद आपसे 3 सवाल पूछ लिए हैं, तो आई एम जस्ट कीपिंग यू अवे फ्रॉम दैट वेब 3.0 क्वेश्चन. सवाल मेरा ये है आपसे कि जो ओपन डेटा की अभी हम बात कर रहे थे कि हम ओपन डेटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं. आपको पता है कि हमने GDPR की बात कर ली है, हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से हम साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं. बट व्हाट इज योर टेक, एथिकली हम कहाँ पे जाके लैंड कर सकते हैं इस चीज को? व्हाट इज द राइट बैलेंस ऑफ थिंग्स कि हाँ ये कर सकते. I think that's a very challenging question. I think totally depend करता है हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं. So जब हम फिनटेक की बात कर रहे हैं, तो अगर एप्स इतनी इंट्यूटिव हों कि उनके अंदर पॉपअप्स के थ्रू लोगों को मैसेजेस आ रहे हों, अपडेट्स आ रही हों थोड़ी सी, तो शायद लोग ज्यादा कंफर्टेबल होना शुरू नहीं होंगे. एक और वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है मेरा, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, the challenge in most large organizations, including financial institutions, is कि वहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वो उसको लीड कर रहे हैं IT डिपार्टमेंट्स. वो भी ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट हैं इस चीज के, बट द प्रॉब्लम इज कि वो भी डॉक्टर हैं, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटरनेट वाली साइड की है वो भी डॉक्टर वाला ही फील्ड है. बट मसला है कि जो IT वाले हैं वो हड्डियों के डॉक्टर हैं और ये आंखों का प्रॉब्लम. So these are two separate fields within the larger IT or digital. So you need to really understand कि जब एक मोबाइल ऐप को या किसी को फ्रॉम एन IT या टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव देखेंगे वो डिफरेंट तरीके से होगा, बट आप उसको यूजर्स पर्सपेक्टिव देखेंगे, यूजर फर्स्ट के एंगल से देखेंगे, यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीजें फर्क हो जाएंगी. अभी जैसा रोशान ने बात करें कि हम अभी एप्स तो बना रहे हैं, बट हम उसकी यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग, उस पर कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है. वो कहते हैं बस ऐप बना दें, बस टेक्नोलॉजी बस रेडी कर दें, बस ताकि हम कम से कम पैसों में हमारी मोबाइल पे ऐप आ जाए और हम PR कर लें उसकी कि लॉन्च हो गई है हमारी. बट उसकी यूजेबिलिटी क्या है, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग कितनी है, उसकी कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, उसके अराउंड जो प्रोसेसेस हैं आपके, जो खाली ऐप बनाने से अगर आपने इंटरनल अपने सिस्टम प्रोसेसेस अपग्रेड नहीं किए तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक विच आर क्रिटिकल कि हम कैसे इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. बट एंड इट कैन गो रियली रॉन्ग, एक्चुअली रियली रियली रॉन्ग. एक तो ठीक है एक्सीडेंटल ब्रीचेस या हैकिंग और वो अटेम्प्ट्स अलग हैं, बट आपको याद होगा हमारा जो ATMs वाला मसला हुआ था एक बैंक का ईयर और सो बैक,
तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें लोगों को अच्छा हम तो बहुत अभी शायद मोबाइल ऐप्स और उनकी बात करें, हमारे यहाँ तो अभी एटीएम स्कैम्स बड़े चल रहे हैं, बट बाय द वे खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया में है। दीज आर ग्लोबल चैलेंजेस बिकॉज पेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज है उस एज कंपेयर टू लेजिस्लेशन, लॉ एनफोर्समेंट वगैरह वगैरह, एंड इवन एजुकेशन एंड एकेडेमिया टू कैच अप। तो ये एक रेस है जिसमें इस वक्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पेस बहुत तेज। अब आप वेब 3.0 की बात करते हैं तो अभी तो हमारे जो डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं वो बड़ी मुश्किलों से मोबाइल ऐप्स को समझे थे, तो अब वर्चुअल वर्ल्ड को समझना और उसके साथ रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करना, इट विल बिकम अ बिट ऑफ अ चैलेंज देयर एज वेल। तो इसलिए अब आप कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलाइज करें किसी भी फील्ड में हो, उसके साथ साथ डिजिटल को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है और डिजिटल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कि बाइट साइज लर्निंग ऑनलाइन करते रहें, ऑनलाइन यूट्यूब या डिफरेंट अदर रिसोर्सेज, कोर्सेरा वगैरह, और आपके अपने एसीसी के बेशुमार प्लेटफॉर्म्स होंगे, कंटेंट होगा जिनके थ्रू वो ऑनलाइन लर्निंग्स कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका विजन ब्रॉड होगा, आपको एक बेसिक सेंस ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्लेटफॉर्म और न्यू इकोसिस्टम या न्यू रिसर्च, आपको आइडिया मिलता है कि क्या हो रहा है और कैसे उसको इवॉल्व करना है और कैसे उसको देखना है और कैसे उसको इम्बेड करना है बिजनेस में, और उसको कैसे मैं लेवरेज कर सकता हूँ फॉर द गुड एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। बिकॉज देखें कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, एंड आई एम सॉरी फॉर माय लास्ट एग्जांपल, कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस इज लाइक अ नाइफ, एक छुरी है, आप उसको घर में रखते हैं, आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं, गोश्त भी काट सकते हैं, आप कुछ भी उससे, उसके बाद उसको इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आप चाहें तो आप उसको अब्यूज भी कर सकते हैं, आप उसे किसी का गला भी काट सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी पर से इज न्यूट्रल, इट इज टोटली अप टू द ह्यूमन यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी कि उसकी इंटेंशन कैसी है। इसी तरह एक गाड़ी है, उसकी आप एम्बुलेंस बना लें उसको, या आप उसको सुसाइड कार बॉम्ब बना लें, वो भी आपकी चॉइस है। तो इट्स द ह्यूमन फैक्टर विच इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, द ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन एथिक्स की इंप्रूवमेंट लाना, और वो जो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट का बड़ा काम है, और उसके बाद एथिकल जो सोशो एथिकल हमारी लैंडस्केप है वो बहुत वीक है पाकिस्तान में। हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम लोग क्विक रिटर्न्स चाह रहे होते हैं, तो इसलिए हम कई दफा एथिक्स पे एज अ ह्यूमन वी फेल, विच इवेंचुअली ट्रांसलेट्स इनटू टेक्नोलॉजी टू फेल। I hope I've not confused too much. नहीं, मेरा ख्याल है कि दैट इज वेरी वैलिड क्वेश्चन, और मैं अभी कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस भी देख रहा था, इफ यू आर एबल टू हियर मी आउट। तो अभी ऑडियंस में जो सवालात आए हैं वो भी आपके इसी चीज से रिलेटेड हैं कि हम किस तरीके से ये जो अवेयरनेस है, या जो आप लॉक एंड की बात कर रहे थे, विल क्रिएट अवेयरनेस, आपने कहा कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि ये चीजें चल रही हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि हमने देखा है अभी एक जो स्कैम पकड़ा गया था हमारी नेबर कंट्री में से, ये स्कैम रन हो रहा था एज अ कॉल सेंटर टू नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। तो हमने देखा है, बट हम किस तरीके से बहुत क्विकली एजुकेट कर सकते हैं या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, या ऐसा कोई फास्ट पेस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ये चीज़ों को बेहतर कर सके, तो हम ये चीज़ों को बेहतर कर सकें। जी थैंक यू। आई थिंक ये मैं एक सवाल पढ़ भी रहा हूँ सऊदी अरेबिया वाला, कि वहाँ उन्होंने बड़ी जल्दी डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया। देखें कई जगहों पे ना आप शायद ये बहुत जल्दी लोगों को ट्रेन या एजुकेट बाय चॉइस नहीं कर सकते। अगर आप लोगों पे छोड़ेंगे या पब्लिक पे छोड़ेंगे एट लार्ज, तो इट विल बी चैलेंजिंग फॉर देम टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड दे आर नॉट इंक्लाइंड टू डू दैट। अब अगर आप देखें मिडल ईस्ट में एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, ड्यूरिंग कोविड इट वाज मैंडेटरी कि आपने मोबाइल ऐप में, इसी तरह फार ईस्ट में भी बहुत सारी कंट्रीज में लाइक सिंगापुर वगैरह में मैंडेटरी था कि आपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है, और उसके थ्रू गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर रही थी, और उसके थ्रू उन्होंने ग्रुप्स ऑफ पीपल को अलग रखा ताकि इन्फेक्शन रेट कंट्रोल रह सके इन कोविड, और वो अगर एक ग्रुप में है तो दूसरे ग्रुप तक ना उसकी पिलफरेज हो। अब ये वो चीजें, अब पाकिस्तान में द इवेंचुअल चैलेंजेस लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की तरह लॉ इन्फोर्समेंट भी स्ट्रांग नहीं है। तो आप जो मर्जी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बना लें, जब तक वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगी, जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन की वीकनेस के ऊपर कोई पीनलाइजेशन नहीं होगी, जब तक कमजोर और आम शख्स को पकड़ा जाएगा मगर बड़े और रिसोर्सफुल शख्स को उस लॉ में बाईपास मिल जाएगा,
तो फिर कभी भी एक जस्ट पॉलिसीज या फेयर पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। जब तक लोगों में ये फेयर नहीं होगा कि मैंने ये गलती की तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इस तब जिस आज तक हम गाड़ी के लाइसेंस में हम चालान बस कर लेते हैं तो लोग पैसे दे देते हैं, मगर अगर हम जब तक ये नहीं बताएंगे कि लाइसेंस आपका जो है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा अगर आपने 10 से ज्यादा चालान हुए आपके, और अगर कॉन्फिस्केट हो जाएगा और फिर भी आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर आपको 10 साल कैद हो जाएगी या कोई प्रेजेंट टर्म है या कुछ भी है, मगर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इट्स ओके, पीपल ब्रेक लॉ एंड देन दे पे फॉर इट एंड दैट्स ओके फॉर देम, and that's the problem. So law enforcement is the problem, whether it is digital ecosystem or whether it is the traditional analog ecosystem. जब तक हम लॉ एनफोर्समेंट ठीक नहीं करेंगे, लोग फोर्स नहीं होंगे कि वो इन चीजों को खुद सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें और अपने आप को कैपेसिटी बिल्ड करें। सो इट इवेंचुअली गोज बैक टू द स्टेट एनफोर्समेंट। ठीक, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। मगर आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें इन्फोर्समेंट और शाने भी इसी पे रिलाई करें, लेकिन इन्फोर्समेंट इज वेरी डिफिकल्ट इवन इफ वी मेक इट टू लॉज इवन। मुझे ये बताएं, अभी आपने थोड़ा सा टच किया पिछले क्वेश्चन, सॉरी फॉर वेरी ब्लीक पिक्चर हियर and not so very positive outlook, but sorry for that, but just wanted to share the candid view here. जी बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है कि बदर इट वाज वेरी गुड। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आई होप यू आर एबल टू हियर मी आउट इवन विद अ लैग ऑफ जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने बात की कि हमें ना जनरेशन जी के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लेके और उनको हर जगह बताना चाहिए डिजिटल लैंडस्केप के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, बिकॉज दिस इज द वे फॉरवर्ड एंड दे शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम स्कूल वर्ल्ड्स एंड गोइंग फॉरवर्ड। अब उससे पहले आप एक जगह कवर कर चुके थे कि शायद हमारे पास अभी भी बाइट साइज चीज़ें मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर और बाकी कोर्सेरा के ऊपर और ACCA के कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हमारे पास कोई फुल साइज डिग्री कोर्स या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे यंग मेंबर्स या बहुत सारे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं हमारी जो हमसे बात करते हैं, दे वुड लाइक टू रियली मूव इनटू द राइट डायरेक्शन। I would ask you, अगर आप कोई सजेशन दे सकें कि what is the right frame of mind जिसमें जाके, या right डायरेक्शन जिसमें जाके वो mid-20s वाला अर्ली take that route to become digitally transformed or start talking about, start understanding, because they have 40 years of their career in front of them and I don't want them to feel कि हाँ वो जो है ना अभी से शायद उन्होंने एक करियर चूज कर लिया तो they cannot switch, they cannot move। तो अगर कोई सजेशन ऐसी हो तो that would be very helpful। जी बिल्कुल जरूर। आई थिंक वेरी ऑनेस्टली accounting and finance is much more important today, and technology और accounting खास तौर पे और finance ऐसे fields हैं जो cross cutting है। आप किसी भी vertical में चले जाएं, whether it is education, health, agriculture, कहीं भी ये हर जगह ये implement होने ही होने और जरूरत है हर जगह। अब बल्कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस और अकाउंटिंग जो है वो आपस में एक बहुत ज़्यादा इंटरसेक्ट भी करना शुरू हो गए हैं। तो फिनटेक्स क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं। बट दैट डजंट मीन कि वी डोंट नीड ह्यूमंस, एक्चुअली वी नीड मोर ह्यूमंस, बिकॉज फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप ले लें, वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देगी आपकी मशीन लर्निंग के थ्रू, मगर उसके अंदर एक कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस हैं। And I'll give you an example. This is a true example in the West, and I don't want to name the bank. I think, but एक बैंक के केस में ये वहां से ऑर्गेनाइज तरीके से ये पता चलना शुरू हुआ कि उनका आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली रेशियली सेग्रीगेट कर रहा था लोगों को और उनको डिक्लाइन कर रहा था। सो टू बी प्रिसाइज, वो ब्लैक लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा था, अप्रूव कर रहा था उनका सिस्टम, मगर वो वाइट लोगों को अप्रूव कर रहा था। एंड देन समबडी नोटिस्ड इट एंड देन दे स्टार्टेड डिगिंग डीप कि क्यों कर रहा है सिस्टम। एंड देन व्हाट दे रियलाइज्ड वाज कि उस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम को ट्रेन करने वाले जो लोग थे, उनका ही इनहेरेंट बायस था। वो लोग इनहेरेंटली इतने बायस थे कि वो क्योंकि ह्यूमन
अपनी बायस की वजह से सिर्फ व्हाइट को ज्यादा अप्रूव कर रहे थे और ब्लैक कार्ड्स को नहीं कर रहे थे, तो इट इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इनटू द सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रेन सिस्टम एज वेल, बिकॉज उसको भी ह्यूमन ही ट्रेन कर रहे हैं। तो उसके लिए जो डेटा सेट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो वही ह्यूमंस ही बना रहे हैं। तो इसलिए, बट मेरे एग्जांपल देने का मकसद ये था कि इसलिए ह्यूमंस की नीड ज्यादा है, मोर, बट मे बी इन डिफरेंट रोल्स, मे नॉट बी इनटू बेसिक अकाउंटिंग, मे नॉट बी इनटू बेसिक फाइनेंस। वो चीजें शायद ऑटोमेट या डिजिटाइज हो जाएंगी बहुत जल्दी, या हो रही हैं। सो मगर आई थिंक इट इज क्रिटिकल कि अगर आपकी अंडर ग्रेड की डिग्री जो है वो फाइनेंस या अकाउंटिंग में है, तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री जो है वो टेक्नोलॉजी में हो सकती है, या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकती है। और अगर आप डिग्री वाले लेवल पे नहीं करना चाहते, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल कोर्सेरा पे बहुत सारे गूगल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, फेसबुक की ट्रेनिंग्स अपनी अवेलेबल हैं, बाय द वे इवन ऑन फेक न्यूज, कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेक न्यूज। बट जनरली हम इंटरनेट को ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे, तो हम इन चीजों की ड्राई टाइप टॉपिक्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। बट गूगल का एक है गूगल डिजिटल गैराज। आई वुड स्ट्रांगली अर्ज एंड रिकमेंड एवरीवन जिनकी अकाउंटिंग की भी अगर बैकग्राउंड या फाइनेंस की है, कि वो जरूर वो पढ़े गूगल डिजिटल गैराज। इसी तरह गूगल ने भी रिसेंटली लॉन्च किए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स, वो भी बहुत अच्छे हैं ऑनलाइन, जिनसे आप कर सकते हैं। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक इदारा है इग्नाइट, उनका एक इनिशिएटिव है डिजी स्किल्स का, तो उनके भी कोर्सेज ऑनलाइन है। अगर आप डिजी स्किल्स की वेबसाइट से जाके वो कोर्सेज करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, मगर आप वैसे भी जाके उनका सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ सकते हैं। इन दैट केस यू वोंट बी एनरोल्ड एंड यू वोंट रियली गेट अ सर्टिफिकेट, बट यू कैन स्टिल लर्न। इसी तरह बहुत सारे और कोर्सेरा और एस्टैब्लिश्ड और ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, लाइक कोर्सेरा, एडेक्स एंड फ्यू मोर। एक्चुअली अभी लम्स भी एक लॉन्च कर रहा है, इस तरह का प्लान कर रहा है। इस तरह बेशुमार है जो कि ऑनलाइन आपको कंटेंट मिल जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ऑनलाइन कोर्सेज को सीखें, समझें उनसे, और उसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, बल्कि वहां जाके आप शॉर्ट कोर्सेज करके उन कम्युनिटी से समझ सकते हैं कि कहाँ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इंटरसेक्ट कर रही है, जो आपका इंटरेस्ट बन जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको डिजिटल अकाउंटिंग फोरेंसिक्स में काम करने की बहुत जरूरत है, कि डिजिटल अकाउंटिंग में, या ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं या ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। इसी तरह जो मैं एग्जांपल आपको पहले बात कर रहा था, जब हम एयरलिफ्ट और उनकी बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो उस वक्त भी मेरा मकसद था कि जो वेंचर कैपिटल के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस है वो डिफरेंट है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आती है। सो वेंचर फाइनेंस इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल एंड इज मच नीडेड, और पाकिस्तान में आगे आएगी। आई थिंक वी आर जॉइंड बाय आसिफ एज वेल, बट सो आई थिंक देयर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज भी इवॉल्व कर रहे हैं और नए आ रहे हैं। खान अकेडमी is also a great resource। तो बेशुमार रिसोर्सेज और सोर्सेज हैं जहां से आप कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में सर्च करके देख सकते हैं। मगर जब भी आप देखें तो कोर्सेरा पे और इन पे बेशुमार जगहों पे, एडेक्स पे, यूडेमी बहुत अच्छा रिसोर्स है, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। तो बेशुमार ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहां से आप सीख सकते हैं। एंड इसी तरह अभी पाशा ने एक लॉन्च किया है अपनी मेंबर कंपनी साथ मिलकर प्रोजेक्ट, उसका नाम है टेकलिफ्ट, techlift.pk। अगर आपका इंटरेस्ट किसी का टेक्नोलॉजी वाली साइड पे है आफ्टर ACCA, तो आप वहां से भी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, और फिर आप मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं विद टेक एंड फाइनेंस बैकग्राउंड। तो दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जिनको आप लेवरेज कर सकते हैं। आई होप दैट हेल्प्स। For sure, brother, and thank you very much. Welcome, Asif. We have been joined by Asif Peer, CEO of Systems Limited. Asif, just to, can you hear us? Ji, I can hear you. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam, Asif sir. Thank you for joining us. I know that you have just get out of the plane and abhi land kiya aapne. We were joined by Asim Siddiqui, who was the senior country managing partner of EUI, and also Roshan Zafar of Kashyap Foundation. They had to leave around 7 o'clock. So हमारे साथ बदर खुशनूद साहब हैं, जो कि fishy.com और Grammars के founder हैं, co-founder हैं. Before asking you question, let me introduce you to the audience. Asif Saab jo hai, he is a CEO and Managing Director of Systems Limited,
He has a very prestigious career. He has been awarded by Sitara Imtiaz by Government of Pakistan. इनकी कंपनी को टॉप IT एक्सपोर्ट अवार्ड मिल चुका है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी अवार्ड मिल चुका है, and many others as well. Quickly jumping on, हमारे पास तकरीबन 8 से 10 मिनट हैं, and I would like to utilize maximum of that time. आसिफ, अभी हमने बात की है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की और उसमें एथिक्स एंड कल्चर की. आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी कंपनी ज़ाहिर है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर भी रहे होते हैं, तो हाउ डू यू सी एथिक्स एंड कल्चर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? Ji, first of all, thank you for introduction and thank you for letting me in into this session. Digital transformation, I think the ethics and culture is of course a part of the organization DNA, right? So when you are a service delivery organization or system integrator or whatever you do, I think that starts from your values, right? And when you are doing a digital transformation project or any project, right, that it requires to keep in mind about the data and everything that automation of the processes. And I think when you think about from consumer in digital transformation, you always think about from your consumer or from your user perspective, that how you are going to digitize the processes and how you are going to transform their businesses and their usage so they can that it can ease of life through the digital processes and the automation. And of course, there are always ethics and culture that comes into the play when you're designing your journeys as well. It's like personas and journeys that you design during the digital transformation. And that really, if you're just doing a plain vanilla thing without thinking customers, that what customers can do, like from a fraud, from other perspective, and so you just need to make sure that I think from both angles, like when you're designing, then things needs to be in that perspective that the digital transformation journey is not affected by if somebody even is not ethical or does try to do something. So security also comes into play, and how you're designing things into digital transformation or anything in IT. What we do, as I said, like first your people needs to understand the values. That's the first and foremost. If you have that kind of a culture, I think any projects or any work that you do, it defines your from ethical perspective. Hello, can you? Sorry. Asif, sorry, I was on mute. I just wanted you to drill down a little bit on this. Nadeem Hussain Saab has given a little bit of speech where he talked about data transparency, he talked about fairness, he talked about that there are so many things about confidentiality which is missing in data. So can you share some best practices for management of data risk and governance for a business? Yes, like from a data stewardship, like when we start because in all digital transformation, I think you are hosting as a vendor and the customer. There is a data that needs to be captured and stored. And I think, as you all know, the standards that PII to GDPR and all these compliances are there because to secure customer data. And the best practices are that when you have a consumer data, it has to have a proper control who can access what information, where it is stored, if somebody is accessing that information, what are the processes, what are the audits and controls and monitoring available in the tool, in your data structure and databases where you store. Because nowadays it's not like data is distributed, right? It's not like stored at one place. And when you're talking about the data fabrics and data mesh,
cybersecurity mesh. I think these are all the new concepts that you need to be aware, because your data is distributed, and now and data is at various places. Every system has its own data. So you're creating a data fabric to access the data from various sources, and the data security and data privacy is really important. There are many best practices for that. As I said, cybersecurity mesh, that you how apply because you're again, your data is distributed, your storage is distributed, your servers are distributed, everything is in a distributed environment. So always when we use the customer data, say for example, for testing even purposes, we anonymize the data to make sure that there is nothing can be leaked during the testing, or customers' data is not compromised, because confidential information is the one of the most important thing that can bring down the companies, that can bring down any system if it is get leaks. And so these days, I would say that that's a first and foremost element about the data security. So you need to know like which information you need to keep it. Thank you very much, Asif Saab. And considering we are out of time a little bit, and we really appreciate you joining us. We know you are very busy and you have just been on the flight. Badr Saab, बहुत शुक्रिया आपका भी. Thank you very much. It was wonderful talking to you. We have got a lot to think about, especially the way you talked about that. इस तरीके से हम enforcement कर सकते हैं, हमारे पास जो policies मौजूद हैं. इसी तरीके से you shared some very insightful information about young members who would like to join or learn few things from technology part of things. We really appreciate your input. If there are any last words from you, whether we'd like to hear from you. Naji, thank you so much for inviting me, and I appreciate कि आप लोग अपने community के लिए digital वाली side पे efforts कर रहे हैं. I think this is critically important to bridge the gap and to connect the industry with the academia. So appreciate that, and thank you for the invite. Thank you, brother. Thank you very much. Actually, we have a program in ACC which is called Bridging the Gap. So I like the phrase. Thank you, Asif Saab. You would like to share some final thoughts with the ACC members, with the audience? No, I think this is a great community, as Badr said, and I think you guys do a great job in doing these sessions and bringing the members in. I would like to just say that whatever you are doing in your career, like ACC or whatever in accounting, finance, I think always there's a tons of opportunities in information technology world. Like a lot of people can, we have a lot of resources who have excelled in the ERP area, especially because that is the most pertinent. Like we have very good consultants who can make a huge difference. And as we're talking about the data and everything, so data is the key for everything. So, and with the domain expertise, with the business knowledge, and with the business acumen, I think it's a great opportunity for you guys to learn more about the automation, digital transformation, and of course, these ERP transformation that is happening in today's world. So I would like to end like digital, data, and cloud. These are the three things that no matter what you are doing in your profession, you should have some sort of knowledge. And I think you guys are doing a great job in transforming and training your members. And there should be more and more of these things happen, because this is the future. And we need a lot of people. If IT industry needs to grow, this is the area where finance people, and we would be needing a lot of people actually to scale, like in SAP or Microsoft areas, and even commerce. Yes, thank you, Asif. And this gives us food for thought for all the accountants, that there is
so many opportunities available for us, and we have to just look in the right direction. And Badr has also shared some very good websites, good resources which we can use. Thank you, Asif sir, for laying it down for us कि SAP, ERP और ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं. I really have enjoyed talking to you. Lot of new insights came to my way. Or thank you, Asif sir. Thank you, Badr sir. Over to you, Shah Mohammed. Thank you very much, Rauf, Asif, and Badr, for such an insightful session. And wow, that energy, and I can understand that the excitement which is relevant to digital transformation, because you can never say enough when it comes to digital. It's a very fast changing world, and you say one thing and it's obsolete in another minute when it's relevant to digital. So wonderful. I think we had a great conversation, very meaningful conversation. And what I, could take away from that is that we need a good framework, because a framework is very important to even regulate and understand this digital, landscape. Secondly, we need to put awareness in play. We need to educate more and more people to be able to interact with this digital world. And I think rightly picked up by Badr at the end that people should start understanding that ethics is part of their social responsibility. It doesn't has to be imposed by us, or you cannot impose everything by laws or by policing people. It has to come with your personality, with your belief, with your upbringing. So concluding on this note, thank you very much everyone for joining this session. Don't forget to join next 2 sessions from this series, which would be happening tomorrow, 3 p.m. and 7 p.m. 6 p.m. respectively. You can join live feeds on our ACCA Pakistan's Facebook page, and I would be signing off for now. Thank